Okay, so you can record. Okay, so this is 23rd November 20, and I'll start with transcription. Transcription process. एक brief बता देती हूँ फिर से. So suppose it is in prokaryotes. So basically it was studied in prokaryotes only. E. coli में पूरा study हुआ process. Prokaryote और eukaryote में थोड़ा सा फर्क होगा. Prokaryote में because there is polycystonic condition, so there will be no split gene condition. Split gene, did I told you? Split gene means कि कुछ introns होते हैं, कुछ exons होते हैं. Gene is made up of certain regions which are non-coded and there are certain regions which are coded. तो दोनों टाइप की अगर pieces से बना होता है हमारा gene, structural gene, we'll call it as a split gene condition. तो prokaryotes में ऐसा नहीं होता है because they are less evolved and they evolve with the whatever is the DNA they have. So let us see how it happens in the prokaryotes. Now suppose this is the DNA that I made. Suppose ये DNA है 5' 3' 5' 3'. So suppose this is the towards the 5' end will be the towards the 5' end will be the promoter. This वाला जो part है DNA का, this one, this is what we say is the promoter region, and towards the 3' will be the terminator. And what is there will be an enzyme. Parag, it's already being recorded. So there is an enzyme called RNA polymerase, which is made up of 4 subunits: alpha 1, beta, beta dash, and omega. This is called the RNA polymerase, which will be RNA polymerase will be initiating the process. It will be elongating the process of RNA nucleotide polymerization and will be terminating. All the 3 process, all the 3 steps will be done by the same enzyme, RNA polymerase. Suppose this is a split. This is okay. तो देखें कैसे होगा process शुरू. The first step is always called the initiation. Initiation means how this DNA will be opening up. पूरा DNA से open हो जाएगा. So towards the 5' end, this region will be the coding strand, and this will be the template. इसी पे RNA polymerization शुरू होगा. Suppose तो हमारा RNA polymer है यहाँ, polymerase है यहाँ पे, it will be starting and binding with the promoter region. So ये यहाँ पे आके ऐसे bind करेगा. Now इसको process को initiate करने के लिए there will be a sigma factor that will add up, because the enzyme itself cannot catalyze all the 3 steps. To initiate, for initiation, RNA polymerase performs the function of uncoiling the DNA and along with sigma unit. There is a sigma unit. It starts the process. तो पूरा process भी शुरू RNA polymerase ही करेगा, but with sigma unit.
ओके, तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे, दिस द प्रमोटर रीजन, वी से द प्रमोटर। तो प्रमोटर रीजन पे फिजिकली बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज physically binds at promoter region। और ये हो गया हमारा प्रोसेस शुरू। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। लेट्स सी। मैम वेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अक्सर। तो आप डेफिनेशन से शुरू करोगे, ट्रांसक्रिप्शन मींस, वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्सप्लेन करोगे और फिर प्रोसेस। बेटा पराग ये वापस इसलिए कराने बिकॉज एक बैच में ये थोड़ा छूट गया था, तो लेट इट बी अ रिवीजन फॉर यू एंड लेट अदर्स इनिशिएट। Made up of 4 subunits: alpha, beta, beta dash and omega. It's a kind of a complex protein. Done, Dimple? yes ma'am. Others? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. this is how the process is now initiated. Initiated means ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो चुका है। अब देखें ये आगे कैसे बढ़ेगा। इतना पोर्शन देखो डीएनए का ओपन हो चुका है, whichever is the gene, this is a transcription unit that I've mentioned here. यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। Second step is called the elongation process. Now elongation के लिए क्या होगा, सिग्मा यूनिट हट जाएगा। सिग्मा यूनिट separates from RNA polymerase. So it is only the RNA polymerase which alone completes the process. देखो क्या होगा। So प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज हमारा यहाँ था, तो ये काफी आगे बढ़ चुका है आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा यूनिट हट चुका है इसमें से, और ये हमारा है यहाँ पे mRNA. This is the RNA polymerase. तो RNA polymerase is a DNA dependent RNA polymerase. तो ये इस DNA स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करके एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लाता है और जोड़ता जाता है। That is what is the significance of a polymerase enzyme. It polymerizes the nucleotides. तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा और ये बन गया हमारा, ये सिग्मा यूनिट यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया है। So this is the elongation. Elongation means यहाँ पे आरएनए पॉलीमर के न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट आते जाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, और दे विल बी फॉर्मिंग द mRNA. कब तक? जब तक कि टर्मिनेटर साइट इज नॉट रीच्ड. So this end is the terminator site.
ये वाला जो है टर्मिनेटर साइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन पे क्या होगा, जैसे ही टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक रो फैक्टर आके जुड़ेगा, द प्रोसेस विल स्टॉप। टू एंड द प्रोसेस, रो फैक्टर, this is called row factor, attaches to RNA polymerase and ends the process and terminates. Releasing RNA polymerase and mRNA. एक्सक्यूज मी मैम। मैम जैसे मैम डीएनए रेप्लिकेशन में काफी सारे एंजाइम्स थे मैम, टोपोइसोमरेज, हेलिकेज वगैरह, तो मैम यहाँ पे yes, सिलेक्ट yes. यहाँ पे yes, this is the typical quality of RNA polymerase. This alone can categorize many processes. In fact, not all alone. It can make use of this sigma and the rho factors. It's only the elongation phase which it completely independently catalyzes. Otherwise, for other two things, it is a holoenzyme. Holoenzyme means the protein and the non-protein part. So it has a non-protein part, rho factor या sigma factor. But then it is like ऐसा enzyme जो कि सारी steps कर रहा है catalyze. This is your examplers question also. How RNA polymerase can do this, all the steps. Ma'am, mRNA double stranded होता है? No, not at all. It's single stranded. मैंने single strand बनाया देखो. अगर ये double strand होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? Because उसके लिए तो it has to be the single strand has to attach to the ribosomal rRNA. So if it is double stranded, so it cannot make the protein. In fact, we read it in the early part of the topic, transcription में, कि why only single strand is decoded. It's because of this only. Okay, let us see the termination diagram. So this is a coding strand and this is the template. And suppose the end portion is the terminator region, ये वाला. तो जैसे this region is reached, हमारा RNA polymerase will be releasing the mRNA. There's a rho factor here. And suppose this is the mRNA which is released. So this has to be from 5' to 3' in. So this is how it is released. So that is how the whole process of transcription will occur in prokaryotes. तो अगर ये है E. coli जैसा बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया prokaryotes, तो उसमें ये ऐसी प्रोसेस होगा. That means जो mRNA बनेगा, that will be ready to translate. That is, वो प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है. But अगर ये होता है eukaryotes, तो you know eukaryotes में they have a split gene condition. कुछ exons होते हैं, कुछ introns होते हैं.
and introns are the non-coding sequences. So let us see how the situation is there in eukaryotes. In eukaryotes, there is split gene condition. That is, there are some non-coding sequences and coding sequences. So this is the biggest difference with the prokaryotic and eukaryotic transcription. तो देखें कैसी जीन है. Gene is of this type. So there will be exons and there will be introns. There will be exons and there will be introns. Introns are the non-coding and there will be coding sequences. It is this way. Now जब mRNA बनाना है तो mRNA सिर्फ coding sequences से बनता है. So it's only the coding sequences which are decoded, and the non-coding sequences need not be decoded because that will be wastage of energy and time and nucleotides. तो raw material का wastage होगा, time का, energy का wastage होगा. तो इसीलिए सिर्फ जो coding sequences हैं उन्हीं को decode होना चाहिए protein बनाने के लिए. Okay, but that surely doesn't mean कि जो non-coding sequences है they are useless. क्योंकि maybe some other protein बनाने के लिए these exons and introns they may form a combination and they may be decoded maybe for the next protein. So suppose अगर एक protein maltase बनाना है तो maybe this exon and this intron and this exon they are the sequences. But suppose अगर pepsin बनाना है तो maybe this and this is a sequence. या suppose trypsin बनाना है तो maybe this and this is a sequence. So there could be combinations of these exons and introns which may be forming one of the protein or the other. In fact, for a single protein, there could be only these exons will be required for maybe for a single protein, one protein, and for the other proteins, the introns which are lying in here may be the exons. So there could be combinations of this. So basically, we have just 33,000 genes. अगर उन 33,000 genes को हम देखें तो हमारे characters तो बहुत सारे हैं. We have lakhs of characters in our body. तो genes का number कम है और characters ज़्यादा हैं. What does that mean? That means कि एक ही gene के अंदर बहुत सारे introns और exons के combination से एक protein बनता है. तो this may be a non-coding sequence for this protein, but maybe coding sequence for some other protein. ये समझ में आना चाहिए आपको. Okay, so let us see कि suppose ये maltase बनाने के लिए this is kind of the split gene. इसको मैं कहूँगी this is the split gene condition for a protein. तो इसके कैसे इसको ये कहलाता है अगर यूकैरियोट्स में mRNA बना तो वो कैसा बनेगा? That will be carrying the non-coding sequences. लेकिन ऐसे वाले mRNA को न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. In fact, it has to be processed or spliced before it goes out of the nucleus. ये देखें कहाँ हो रहा है यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में तो कहाँ हो रहा था ये पूरा बैक्टीरिया के अंदर और बस यहाँ पे ऐसे within the cytoplasm. But not in the eukaryotes. Eukaryotes में this has to occur within the nucleus. So suppose if we talk about eukaryotes, तो eukaryotes में ये nucleus के अंदर ये पूरा process हो रहा है. This is suppose the mRNA. But because this contains some non-coding sequences also, so we call it as a HNmRNA or heterogeneous mRNA.
ये अभी अनप्रोसेस्ड mRNA है, ये अभी न्यूक्लियर पोर्ट के बाहर नहीं जा सकता. No, this is not allowed. Why? Because this is yet not processed. इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनको प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. So this may not be coding for that right protein. तो इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इसमें से हटाना होगा. सपोज यहाँ पे this portion is the intron and this portion is the exon part. तो देखें इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है. This has to be converted into the processed mRNA. प्रोसेसिंग, ये इसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग, और फिर ये कन्वर्ट होगा इनटू mRNA. So still it is hnmRNA. And so let us talk about the processing. So how the process of processing occurs of hnmRNA, or I'll call it as splicing. So if it is asked how mRNA is synthesized in eukaryotes, तो आपको you have to include the splicing part also. So this will be a big full marks, 5 marks question. Explain transcription in eukaryotes. So you have to start with the definition of transcription, transcription unit, then the process, और उसके बाद फिर hnmRNA का formation और फिर splicing. So these will give you 1 1 1 1 करके ऐसे आपको 5 marks मिल जाएंगे. तो लेट अस सी क्या होता है जब स्प्लाइसिंग होती है. तो मैं फिर से आपको बना के दिखाती हूँ. सपोज एक हमारा mRNA बन गया. सपोज दिस इज आवर mRNA. which has some so this is the intron and these are the exon. Okay, now इसमें splicing करने के लिए क्या होगा. सबसे पहले इसमें मार्क किया जाता है. इट्स लाइक जैसे कि एक मे बी एक टेलर के लिए एक क्लोथ है, एक प्लेन क्लोथ है उसके पास ना, उसको मार्क करना होगा कि फ्रॉम वेयर इट हैज टू कट इट. तो इट इज बेसिकली कि इसमें से इंट्रॉन्स को निकालना होगा. सपोज ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन. तो व्हाट द प्रोसेसिंग में क्या होगा. प्रोसेसिंग मींस कि द इंट्रॉन्स दे हैव टू बी कट एंड रिमूव्ड. तो फॉर दैट दे हैव टू बी मार्क्ड फर्स्ट, कि इनको मार्क किया जाएगा. पहले मार्क करने से पहले इस पूरे hnmRNA को इट्स लाइक टैगिंग कर दी जाती है. इसकी टैग करना मींस कि सपोज दिस इज द क्लॉथ व्हिच हैज टू बी कट. तो इट इज लाइक वो टेलर के टेबल के ऊपर आ गया है, तो उसको टैग कर दिया जाएगा कि दिस पर्सन्स क्लॉथ इट इज ऑफ दिस शेप दैट यू हैव टू कट इट. तो उसके लिए क्या करना होगा. इसकी कैपिंग की जाएगी और इसकी टेलिंग की जाती है. लेट्स सी, पहला स्टेप आएगा इसका कैपिंग एंड टेलिंग. कैपिंग एंड टेलिंग. इट इज एग्जैक्टली लाइक अ टेलर्स क्लॉथ. उसको कैसे कट करना है, कैसे मार्क करना है, किस पर्सन का है, उसके आपने कपड़ों का नाप ले लिया है, टैग कर दिया है. नाउ ही विल बी मार्किंग एंड कटिंग फाइनली, एंड देन उसको जोड़ेगा. तो एग्जैक्टली ऐसे यहाँ भी होगा. तो कैपिंग एंड टेलिंग में पहला कैपिंग मींस 5 डैश एंड की तरफ. सपोज दिस इज द 5 डैश एंड, दिस इज द 3 डैश एंड. एट द 5 डैश एंड देयर विल बी अ 7 mg cap that will be attached. 7 mg cap means 7 methylated guanosine. एक ऐसा गुएनोसाइन जिसमें 7th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, उसको लाके 5 डैश एंड पे जोड़ दिया जाता है. जैसे कि लेट मी टेल यू. सपोज ये था मेरा mRNA, hnmRNA. इसके इस साइड में एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा और बहुत सारे यहाँ पे
जुड़ जाएंगे. This is called the 7 mg cap. At the 5' end और 3' end पे आ जाएगी एक poly A tail. Poly A means एक polymer of adenosine phosphate ATP. ऐसे वाली एक बड़ी चेन around 200 to 300 ऐसे वाली adenylated nucleotides they will be attached at the 3' end. इसको बोलेंगे हम टेलिंग. तो क्यों हुआ ये कैपिंग एंड टेलिंग? क्या सिग्निफिकेंस था इसका? मैं लिख देती हूँ पहले. A 7 mg cap is attached at 5' end and a poly A tail around 200 to 300 adenylated nucleotides are attached at the 3' end of HN mRNA. This is still HN mRNA. Now, why this is done? Seven mg cap helps in binding mRNA to smaller subunit of rRNA. तो क्या होगा देखो, कैसे पता चलेगा प्रोटीन सिंथेसिस के समय कैसे पता चलेगा कि rRNA को किस तरफ जाके जोड़ना है? तो वो हमेशा 5' end की तरफ आके अटैच होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन प्रोसेस. तो कैसे पता चलेगा कि दिस इज द 5' end? तो उसके लिए ये 7 mg cap is attached at the 5' end. And what is the significance of this poly A tail? Poly A tail provides longevity to mRNA. What is longevity to mRNA's life? ये सपोज अगर ये mRNA मैसेंजर RNA बनके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो वो कितनी देर तक साइटोप्लाज्म में रह सकेगा? You know कि the cell keeps its cytoplasm clean. उसमें कोई डेब्रिस नहीं होना चाहिए. But suppose if there is the mRNA is lying there and the protein synthesis not yet started, so it may not lie there for long. It will be cut, chop and thrown into the dustbin. That means it will be disposed of. तो उसको dispose of नहीं देने के लिए क्या करना होगा? उसकी लाइफ को बढ़ाना होगा, उसको वहां रखना होगा. एंड ये ऐसे मार्क करके रख दिया गया है कि ओके दिस क्लॉथ इज नाउ रेडी टू बी स्टिच्ड. तो वो वहां पे एक मार्क करके रख दिया जाता है सो दैट इट शुड नॉट बी चॉप्ड अवे, इट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड अवे टिल देयर इज protein synthesis occurring. So for that, this poly A tail will be there to increase the life of mRNA. And it is the length of the mRNA that will be deciding its life. Tail length and longevity of mRNA are positively correlated. Longer the tail, longer is the life. Otherwise क्या होगा? Otherwise it will be disposed of. So once the protein synthesis has been over, this mRNA will be disposed of. इसको काट के और इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है. डस्टबिन in the sense, lysosomes, they'll be disposing it off. So इसीलिए
एक पॉली ए टेल इसमें अटैच कर दी जाती है। तो 5 mg कैप और पॉली ए टेल, नाउ दे आर रेडी। नाउ दिस इज द HNM RNA रेडी टू बी स्प्लाइस्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा। कैन आई शिफ्ट? कैन आई शिफ्ट? यस मैम। ओके, क्या हुआ प्रज्ञा? नॉट वेल? नो मैम, क्या हुआ? फ्लू हो गया। Many of you are having flu. Take care, अपना ध्यान रखो and keep your head covered. ठंडी हवा चलती है तो परेशान हो जाते हो आप। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म मैम HNMRNA बनने से पहले ही मैम इंट्रॉन्स को मैम रिमूव नहीं कर सकते, जैसे RNA पॉलीमरेज जब कर रहा होगा? और वही तो कैसे करें ना, प्रोसेस हाउ टू डिस्टिंग्विश के इस प्रोटीन के लिए यही रीजन्स चाहिए। दिस अकर्स, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि जो डिफरेंशिएट हो रहा है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है। तो कंट्रोल इज एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ओके मैम। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा। पॉली ए टेल जुड़ चुकी है, 7 mg कैप लग चुका है। दैट मीन्स इट इज नाउ रेडी टू बी स्प्लाइस्ड। मार्किंग हो चुकी है कहाँ से कहाँ कट करना है। तो देखें अब क्या होगा। देन देयर विल बी सम स्प्लाइसियोसोम्स। ये मैं फिर से बनाती हूँ। सेवन mg cap at the 5' end, 3' end, but there is a poly A tail. There will be some spliceosomes that will come and attach here. These are the spliceosomes. And what are these spliceosomes? They are the snubs. Attach at the introns to cut and remove it. They are snubs. इनको हम pronounce करते हैं snubs. What is that? This is small nucleoriboproteins or snmRNA. snRNA. Small nucleoribonucleic acids. So these will be attaching at themselves at the this introns दोनों end पे, and now they'll be cutting it. तो next step होगा हमारा, कैसे दिखेगा ये? So this will be now looking something like this.
बीच में से क्या कट गया है? दिस. This has been cut. Introns. This is exon. They're cut. So then the last step is where the ligase will be coming and joining these exons. Ligase joins the exons to form mRNA. तो एक प्रोसेस्ड mRNA बनाने के लिए ligase आके इनको जोड़ देगा. So this is the mRNA. ऐसे बन जाएगा हमारा processed mRNA. Ma'am, please shift back to the previous sheet for a second. This one or back? This? Yes, ma'am. Ma'am, done. यस, इसको हम एंडोन्यूक्लियस कह सकते हैं पर अब क्योंकि ये डीएनए को बीच में से कट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में से कट कर रहा है. But because it is mRNA that we are talking about, it's not DNA. But yes, still we can say it is endonuclease. हम यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, हम उसी की वजह से इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं. मनी नथिंग टू विद मोनोसिस्ट्रोनिक है, पर उसके अंदर भी कुछ इस तरह के पोर्शंस हैं. ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि मोनोसिस्ट्रोनिक है इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमसे बात ही एक जीन की कर रहे हैं ना. जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगल जीन. Then done with this. Yes, ma'am.
Okay, now this is only for PMT. A functional mRNA structural gene need not be all its exons. It is sex specific, tissue specific, even developmental stage specific. That is, a single gene may code for many proteins. This is called alternate splicing. The same thing that I was telling you, कि एक ही जीन बहुत सारे प्रोटीन्स भी कोड कर सकती है. It just depends कि उसने कितने इंट्रॉन्स को सेलेक्ट किया है, किसे इंट्रॉन माना है और किसको एक्सॉन. It will be the combination of introns and exons that will be responsible for one protein. एक ही टिश्यू में एक ही जीन से 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, by taking the combinations of introns and exons. Yes, single gene has introns. That is what we are talking about. इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि एक ही जीन में बहुत सारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं. सपोज जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सपोज दिस इज अ जीन and suppose this is exon, intron in between. सपोज ये एक प्रोटीन 1 कि ये जीन 1 है, तो दिस इज जीन फॉर अ प्रोटीन 1, तो उसमें ये दिस इज द पोर्शन कॉल्ड इंट्रॉन, दिस कॉल्ड एक्सॉन. बट सेम जीन, यही कि यही जीन क्या कर सकती है, इसमें सपोज इस बार ये सिर्फ ये वाला इंट्रॉन है, इंट्रॉन, इंट्रॉन and maybe this one also, intron. So this will be forming protein 2 this time. So this is the same gene, gene 1 ही है ये भी, या ये ऐसे भी हो सकती है. This can form the third type of protein also. By again suppose this intron, ये वाला, फिर maybe this one also acts as an intron, then this one also. This can be intron and this can be intron, but not the rest. So this will be forming the protein 3 from the same gene 1. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीन से आप वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बना सको by choosing different combinations of introns and exons. And this depends on कि आप मेल है कि फीमेल है. This depends upon कि आपका कौन सी टिश्यू में प्रोटीन बनना है. And this depends upon कि आप डेवलपमेंट स्टेज के किस पार्ट में हो. Suppose embryo में हो, suppose you're in the growth phase, suppose you have become an old person. So whatever may be your phase of development, it may depend on that also. So that is all about the transcription. तो अब हमारा mRNA ready हो चुका है and it is ready to move out of the nucleus. So this will now go and lie in the cytoplasm so that this is further acted upon by many other this machinery and protein will be synthesized. mRNA is now ready for
translation. It is moved out into the cytoplasm. Through nuclear pore. Okay, so this is how the topic is. So I'll be putting this on, I think YouTube में डाल दूँगी मैं इसको, so that everybody can see this. ये वाला video transcription के नाम से I'll put it. Okay, so let's stop here. Ma'am, wait. कल करते हैं translation. Tomorrow we'll talk about the big topic, translation again. पर ये आपको आज ही याद हो जाना चाहिए. Should be able to grasp the whole thing today itself. Don't wait कि कल translation आएगा, that will be too difficult again. Saturday को कौन सा टेस्ट दोगे? Photosynthesis. Okay.